प्रॉब्लम नंबर 51। यहाँ पे हम क्लोनिंग और यूजेनिक्स को साइड बाय साइड लेकर चलेंगे एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉब्लम 51 इज डज सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक जीनोटाइप by the method of cloning is regarded as a eugenic activity or not। अगर हम क्लोनिंग के जरिए स्पेसिफिक जीनोटाइप को सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या ये यूजेनिक एक्टिविटी नहीं है? देन in some circumstances the answer is yes। Keep in mind that cloning not always lead to the production of exact copies of the cloned person। क्योंकि हमने यूनिफॉर्मिटी जेनेटिक्स में बात की, जब भी हम क्लोन्ड एनिमल या ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं वी टॉक अबाउट द यूनिफॉर्मिटी इन द जेनेटिक मटेरियल। नो डाउट द जेनेटिक सीक्वेंस रिमेन द सेम एज दैट ऑफ द पेरेंटल सेल। यहाँ पे पेरेंटल सेल से मुराद वो सेल है जिससे हमने न्यूक्लियस एक्वायर किया है फॉर क्लोनिंग पर्पस। So here the cloned human being or the cloned animals have the same genetic sequence as that of the person from which the nucleus has been obtained। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे factors involved हैं that leads to the development of the individual। If we talk about the conditions inside the womb or during the fetal life, it can be structural or metabolic influences that not only affect the enucleated egg but it can also affect the development of the differentiated cells। इसके अलावा एक और फैक्टर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस are the different stages of gestation। Apart from these biochemical and genetic factors, non-genetic factors are also involved in the development of individual। So it is not necessary that the cloned human being is same as that of their parents। So the non-genetic factors which are involved are culture, nutrition, it can be human environment, it can be education provided by the parents or at the school level, then economic status of the family and even the development of the personhood। These are the non-genetic factors that may vary among different individuals culturally, socially and economically। Opposition group जो कि क्लोनिंग के अगेंस्ट है उन्होंने कहा कि जब भी हम ह्यूमन क्लोनिंग करते हैं इट इज़ एक्चुअली वी आर इन्वॉल्विंग द यूजेनिक एक्टिविटी। इट इज़ एक्चुअली अ बिग मिस्टेक दैट इज़ डन बाय द साइंटिस्ट टू रेप्लिकेट ह्यूमन बीइंग because in future we have to face different challenges because of this human cloning activity or because of this eugenic activity। Because cloning allows genetic manipulation of the genetic material and this manipulation is actually considered as an increased effort of eugenics। साइंसदानों ने इसके जवाब में कहा कि यूजेनिक्स एक अटेम्प्ट है ताकि हम ह्यूमन बीइंग्स को इम्प्रूव कर सकें। नाउ हियर द इम्प्रूवमेंट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक सोशल factors or educational and because of other opportunities but it is basically based on the genes। By altering the genes through a cloning technique we can allow a child to born in a different environment in a different way and such a baby is said to be a cloned baby। So the opposition group said that nowadays human cloning is just used to select specific genotype in order to become smarter, taller or blonder and now parents are selecting specific traits of their children to make them more intelligent। What is this? This is actually a threat of eugenics which is actually inherent in the scientific technologies and this allow the individuals to modify the inherited traits as well। क्योंकि जहाँ हम इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने की बात करते हैं वहाँ हम दूसरी तरफ एंगर को भी इंक्रीज कर रहे हैं। So if one gene which is involved in different activities then we can modify the inherited traits in different ways।
This creates the complexity and a bigger future challenge for the scientist.